Hi students, welcome back to Chaitanya Mathematics Academy classes. Today the class is Intermediate Second Year Maths 2A paper. The chapter is Probability and the first long question important are gunshot question. Okay, first important problem of the probability. Okay, right. So the question is, if the probabilities of three mutually exclusive events are respectively given as 1 plus 3p by 3 comma 1 minus p by 4 comma 1 minus 2p by 2, then prove that p is in between 1 by 3 and 1 by 2. So 1 by 3 less than or equals to p less than or equals to 1 by 2, means p is in between 1 and 3, also 1 by 3 and 1 by 2. Clear? Okay, right. So now the solution of the given problem. The probabilities of three mutually exclusive events are respectively given as, right? So let 0 less than or equals to 1 plus 3p by 3 less than or equals to 1. So the probabilities are in between 0 to 1. Okay, the probabilities exclusively given are 1 plus 3p by 3, 1 minus p by 4, 1 minus 2p by 2, right? The probability is in between 0 to 1, second one also 0 to 1, third one also 0 to 1. Okay, right. So we have to find out p limits. Okay, so 3 is divisible, it will become multiply, means 0 into 3 less than or equals to 1 plus 3p less than or equals to 1 into 3. Clear? Okay, so that implies 0 into 3 means 0 less than or equals to 1 plus 3p less than or equals to 1 into 3 3. Okay, and so बीच में अपन को क्या होना, कंपलसरी p रहना. So बीच में जो भी टर्म्स है, टर्म में से पूरा निकाल देना, खाली p रहा जैसा देखना. जस्ट रिमूव द टोटल नंबर्स except p. Okay, right. So plus 1 become minus 1, means 0 minus 1 less than or equals to remaining only 3p and less than or equals to plus 1 become minus 1 to the next side. Okay, let this one, suppose इसको LHS समझो, इसको RHS समझो, right? So LHS को plus 1 become minus 1 and RHS को become plus 1 become minus 1. Okay, so that implies 0 minus 1 means minus 1 less than or equals to 3p as it is less than or equals to 3 minus 1 is 2. Clear? Okay, right. So next extra into p is there. Okay, so sorry, 3 is there, means minus 1 into 3 become divisible and remaining only p less than or equals to 2 into 3 become by 3. Okay, so minus 1 by 3 less than or equals to p less than or equals to 2 by 3. Okay, right. Let it is this equation is, this unequation is equals to 1. So इसको क्या ले रहे हैं अपन, इक्वेशन नंबर 1 ले रहे. ओके, नेक्स्ट सेकंड वन, व्हाट इज द सेकंड वन? सेम अगेन, 0 लेस देन आर इक्वल्स टू 1 माइनस p by 4 लेस देन आर इक्वल्स टू 1. सेम थिंग, इसमें भी क्या करना अपन, पूरे नंबर्स को लेफ्ट साइड राइट साइड सेंड करके रिमेनिंग p रखना अंदर, राइट? ओके, सो दैट इंप्लाइज 0 into 4 less than or equals to remaining there is only 1 minus p less than or equals to 1 by 4 become into 4. Okay, right. Next one, see, 0 into 4 we know already, 0 less than or equals to 1 minus p as it is, 1 minus p as it is less than 1 into 4 is 4. Okay, so there is only 1 minus p, so remaining 1 send to the one left side and right side. 0 plus 1 become minus 1 less than or equals to minus p less than or equals to 4, again plus 1 become minus 1. बीच में p रहा जैसा देख रहे, रिमेनिंग लेफ्ट साइड राइट साइड सेंड कर दे. ओके, 0 minus 1 means minus 1 less than or equals to remaining minus p less than or equals to 4 minus 1 3. Okay, so only we need p value, only we need p limits, but extra there is minus. So minus को remove कर दो, minus को remove कर दो बोलो तो minus become plus, plus become minus, and this sign will be also
changed. Okay, so less than or equal to become greater than or equals to, and minus common, and less than or equals to become greater than or equal to, plus 3 become minus 3. Okay, माइनस कॉमन निकाल रहे, अपने को बीच में ओनली प्लस पी रहना, माइनस पी है तो माइनस कैंसिल करना बोले तो माइनस कॉमन निकाल रहे, सो माइनस कॉमन निकालो तो माइनस बिकम प्लस टर्म बिकम माइनस टर्म, एंड देयर इज आल्सो साइन विल बी आल्सो चेंज्ड, लेस देन आर इक्वल टू बिकम ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू बिकम ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 3 है माइनस 3, सो अपने को लेस देन आर इक्वल टू होना, चेंज कर दो, रिवर्स लिखो, माइनस 3 एंड 1 एंड पी, सो रिवर्स लिख रहे ना, सो ग्रेटर देन बिकम लेस देन आर इक्वल टू, मीनिंग सेम आ रहा देखो, p is greater than or equals to minus 3, 1 is greater than or equal to p, here minus 3 less than or equal to p less than or equals to 1, right, meaning same hai. Okay, so let it is equation, let it is number 2, clear. Okay, now third one, third one is also same, let 0 less than or equals to 1 minus 2p by 2 less than or equals to 1. Okay, so that implies 0 into 2 less than or equals to remaining 1 minus 2p as it is, less than or equals to 2 into 1. Okay, right, 0 into 2 means 0, less than or equals to 1 minus 2p as it is, less than or equals to 2 into 1, 2. Okay, right, see, plus 1 is there, plus 1 become minus 1 means 0 minus 1 less than or equals to remaining only in middle minus 2p less than or equals to 2 plus 1 become minus 1. क्लियर. ओके, बीच में ओनली क्या रहना, p रहना, दूसरा कौन सा भी है उसको स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट साइड राइट साइड सेंड कर देना. ओके, सो 0 minus 1 is minus 1 less than or equals to minus 2p less than or equals to 2 minus 1 is 1. Okay, right, extra 2 is also there, into 2 is in multiply means it will become divide means by 2, into 2 है by 2 हो जाता, and remaining क्या है बीच में minus p है. Okay, right, less than or equals to 1 and into 2 become divide. क्लियर, बीच में आपने को क्या होना, प्लस ही होना, बट यहाँ पे क्या है माइनस है, माइनस कॉमन निकाल रहे, माइनस कॉमन निकाला तो क्या होता, प्लस टर्म बिकम माइनस टर्म बिकम प्लस टर्म, एंड लेस देन आर इक्वल्स टू आल्सो बिकम ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, मीन्स प्लस 1 by 2 greater than or equals to plus p greater than or equals to plus 1 by 2 become minus 1 by 2. रिवर्स लिखो, मीनिंग सेम ही होता, रिवर्स लिख के ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू लिखना, माइनस 1 by 2 लेस देन आर इक्वल्स टू p एंड लेस देन आर इक्वल्स टू प्लस 1 by 2. क्लियर. ओके, राइट, सो right, so let it is number 3. Okay, so 1 2 and 3 completed, remaining. Okay, right, so my 1 completed and number 2 and number 3, right. so okay, यहाँ पे देखो एक बार क्वेश्चन में माइनस है, अपन प्लस लिखे थे, minus 1 by 3 less than or equal to p less than or equal to 1 by 2, from 1 to 3, from 1 2 and 3. Okay, so from 1 to 3, first one is minus 1 by 3 less than or equal to p less than or equal to 2 by 3, this one minus 3 less than or equal to p less than or equal to 1, this one minus 2 less than or equal to p less than or equal to 1 by 2. Starting value is minus 1 by 3, ending value is 1 by 2. Okay, so that means starting value minus 1 by 3, minus 1 by 3 less than or equals to p less than or equals to ending value 1 by 2. Okay, starting value minus 1 by 3 and ending value 1 by 2, right. इसमें याद रखने का क्या है, just first probability is, first event is in between 0 to 1, second also in between 0 to 1, third also in between 0 to 1. Okay, right, so और एक याद रखने का क्या है, ये बीच में जो ओनली टर्म दिए ना उसमें खाली p रहना, रिमेनिंग टोटल लेफ्ट साइड सेंड करना एंड राइट साइड सेंड करना. ओके, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. राइट, द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इफ कैपिटल A B C are exclusively
sorry, if A, B, C are three independent events of an experiment such that P of A intersection B complement intersection C complement equals to 1/4. ऊपर C रहा तो क्या बोलते हैं उसको? Complement. It is called a complement. Okay. P of A intersection B complement intersection C complement equals to 1/4 given, and one more value P of A complement intersection B intersection C complement equals to 1/2 give 1/8 given, and the last given value is P of A complement intersection B complement intersection C complement equals to 1/4 given. Okay, then find the value of P of A, P of B and also P of C. Okay, so P of A find out करना है, P of B find out करना है and P of C find out करना है. Okay, right. The first given value is given that P of A intersection B complement intersection C complement equals to 1/4. Okay, first given value. So we can write this one as P of A into P of B complement into P of C complement. Okay, the given values are P of A into P of B complement and P of C complement equals to 1/4. Let the given is equation number 1. So from first one we can get the first equation, and the given second value is P of A complement intersection B into C complement equals to given 1/8. Okay, from this we can write P of A complement and into P of B and into P of C complement equals to the value is 1/8. Let it is equation number 2. Okay, so the first one is P of A into P of B complement into P of C complement equals to 1/4 given. Okay, right, first equation completed and second equation also completed. The third one given is P of A complement intersection B complement intersection C complement equals to 1/4. Very important and very easy problem. Problem में कुछ भी नहीं, just separate कर रहे अपन P of first one into P of second one into P of third one. ये कब अप्लाई होता? इंटरसेक्शन रहा तो अप्लाई होता, यूनियन रहा तो अप्लाई नहीं होता. सो P of A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट रहा तो ऐसे नहीं लिख सकते. इंटरसेक्शन रहा तो P of first one, अगर ओनली 2 दिए P of first one into P of second one, अगर 3 दिए into P of third one, 4 दिए into P of fourth one. Okay, clear? Right. So this one, see, intersection is there means P of A complement फर्स्ट वन एंड P ऑफ सेकंड वन इंटू P ऑफ थर्ड वन. बीच में डाट लिख रू, डाट रखा बोले तो उसका मतलब क्या है? मल्टीपल है. ओके, सो लेट दिस इक्वेशन नंबर 3. ओके, इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीटेड, इक्वेशन 2 कंप्लीटेड, इक्वेशन 3 कंप्लीटेड. ओके, राइट. सो द गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इक्वेशन इंफॉर्मेशन से अपन 3 इक्वेशंस कंप्लीट हो गए. ओके, राइट. फर्स्ट से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड कंडीशन से सेकंड वन, थर्ड कंडीशन से थर्ड कंडीशन. यहाँ पे फार्मूला लिख रू मैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B का फार्मूला लिख रू. ओके, P ऑफ A इंटरसेक्शन B रहा तो अपन क्या लिखते? P ऑफ फर्स्ट वन इंटू P ऑफ सेकंड वन. ये अपने को है सो फार्मूला है. सो इंटरसेक्शन रहा तो उसको प्रोडक्ट लिख सकते, मीन्स P ऑफ फर्स्ट वन इंटू P ऑफ सेकंड वन इंटू P ऑफ थर्ड वन. ओके, सो ये फार्मूला है, अपने को फार्मूला लिख दिया मैं. सो इक्वेशन 1 2 3. ओके, राइट. सो नाउ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1/2 करेंगे. ओके, 2/1 या 1/2 कैसे भी कर सकते हैं अपन. सो इक्वेशन 1/2. ओके, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन, right, equations completed and equation 1 by equation 2, equation 1 by equation 2 कर रहे, equation 1 divided by equation 2. okay, so equation 1 by equation 2 means LHS by LHS, RHS by RHS. okay, so first one is P of A into P of B complement into P of C complement by divided by LHS by LHS, sorry, this one. okay, so P of A complement into P of B
into P of C complement. Sorry, equation 1 by, I think equation 3. Equation 1 by equation 3. Okay, equation 1 by equation 3 means here B complement. Okay, right, clear. Equation 1 by equation 3. Okay, equation 1 में RHS क्या है, what is the value, 1 by 4, and equation 3 RHS also 1 by 4. Clear. C, equation 1 by equation 3 करे LHS by LHS and RHS by RHS. Okay, C, P of B complement cancel, P of C complement get cancel, and 1 by 4 also cancel. Remaining is P of A by P of A complement equals to 1 by 1 R1, 1 by 1 R1. Okay, so that implies cross multiplication is P of A into 1 P of A, okay, and equals to P of A complement. Clear. P of A into 1 P of A complement. So that implies P of A as it is, okay, and P of A complement formula is 1 minus P of A. P of A complement formula 1 minus P of A. P of B complement formula 1 minus P of B. P of C complement formula 1 minus P of C. Okay, so minus P of A become plus P of A to the left side, P of A, and minus P of A become plus P of A equals to 1. Okay, right. So P of A minus P of A become plus P of A equals to 1. P of A plus P of A become 2 P of A. Okay, P of A plus P of A means 2 P of A equals to 1. So that implies P of A equals to 1 and into 2 become divide 2. So that implies P of A value completed. Okay, that implies P of A value completed. Okay, next one. So equation 1 by equation 3 completed. From 1 by 3 P of A completed. Next from 2 by 3. From 2 by 3 means equation 2 by equation 3. Equation 2 by equation 3. Okay, clear. So that implies equation 2. Again same LHS by LHS, RHS by RHS. LHS is P of which one? Second one. Okay, so P of A complement, P of A complement, and into P of B into P of C complement. Clear. By LHS by LHS. What is LHS of third one? Total complements means P of A complement, P of B complement, P of C complement. Clear. Equals to, what is RHS? 1 by 4 by 1 by 8 by 1 by 4. Second by third है ना, equation 2 by equation 3. P of A complement P into P of B into P of C complement, and this one LHS is P of A complement, P of B complement, P of C complement, and RHS of second one is 1 by 8 and RHS of third one is 1 by 4. Clear. Okay, right. So see, P of A complement get cancel, P of C complement get cancel. Okay, remaining is P of B by P of B complement. remaining क्या बचा वो लिख दिया, right. So right side 1 by 8 as it is into 1 by 4 become reciprocal means reverse. 1 by 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में लिखना बोले तो क्या होता है, रेसिप्रोकल बोले तो रिवर्स होता है. ओके, 1 by 4 become 4 by 1. ओके, सी 4 1s are 4 2s. ओके, सो P of B by P of B complement equals to 1 by 2, 1 into 1 and by 2 into 1 2. Clear. So P of B by P of B complement equals to 1 by 2 आया. ओके, नेक्स्ट बोर्ड पे बोलेंगे इसका, राइट. सो P of B by P of B complement equals to क्या आया इससे पहले वो और एक बार लिख रहा हूं मैं, P of B by P of B complement equals to क्या है अपने को 1 by 2. So P of B by P of B complement equals to 1 by 2, right. From this one cross multiplication 2 into P of B, 2 into P of B equals to P of B complement into 1 P of B complement. Clear. और इससे पहले बताए थे ना हमें P of A complement बोले तो क्या लिख सकते हैं, बोले 1 minus P of A. P of B complement बोले तो क्या लिख सकते हैं, 1 minus
P of B. Clear? Okay, right. So minus P of B become plus P of B. 2 P of B already is there, minus P of B become plus P of B. Okay, and equals to right side is only 1. See, 2 P of B plus 1 P of B means 3 P of B. Okay, PA, PB, PC equals to 1. So P of B value is equals to 3 is in multiply means it will become divisible, means P of B value also completed. Okay, right? P of A value completed and P of B value also completed, right? Next, so equation 1 था, equation 2 था, equation 3 था. Okay, 1/3 complete करके 1/3 करके P of A value find out करें, 2/3 करके P of B value complete करें. अब P of रिमेनिंग क्या है? P of C है. सो कौन से भी इक्वेशन 1 लेके कर सकते हैं, सिंगल डिविजिबल नहीं, ओनली इक्वेशन एक ही इक्वेशन लेके कर सकते हैं. P of A या P of B या P of C, कौन सा भी एक इक्वेशन लेके उसमें P of A वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना एंड P of B वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके P of C वैल्यू फाइंड आउट करना. इक्वेशन 1 मैच करना, इक्वेशन 2 मैच करना, इक्वेशन 3 मैच करना बोल के कंडीशन नहीं है. कौन सा इक्वेशन भी लिए तो भी सेम आंसर आता है. लेट एनी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, सब्स्टिट्यूट द P of A वैल्यू 1/2 and substitute P of B value 1/3, then we can get P of C. Substitute in any equation. Okay, so first one or second one or third one, it is not a condition. Substitute in any equation. So I am taking here equation number 1. Okay, equation number 1 is P of A into P of B complement, P of A into P of B complement into P of C complement equals to 1/4. राइट. सो वी विल टेक एनी इक्वेशन, फर्स्ट भी ले सकते हैं, सेकंड भी ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं, कौन सा इक्वेशन लिए तो भी सेम आंसर आता. ओके, सो दैट इंप्लाइज सी P of A, राइट फर्स्ट ऑफ ऑल P of A and write P of B complement. P of B complement formula 1 minus P of B. Okay, we have to find out P of C means P of C complement को वैसे ही लिखो, लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्लियर? P of C होना अपने को, so P of C complement को let the write same as it is, just simplify P of B complement formula 1 minus P of B. Now substitute P of A value and P of B value. What is P of A value? 1/2. Right, and 1 minus what is P of B value? 1/3 and P of C complement as it is equals to 1/4. Clear? Okay, just P of A value substitute करा and P of B value substitute करा. Okay, let the simplify. So 1/2 as it is. See, 1/2 is in multiply, it will become to the next side is it will become reciprocal, or right same as it is 1/2 into 3 into 1 3, 3 minus 1, or LCM is 3 into 1 3, 3 minus 1/3. Okay, so P of C complement again as it is equals to what is the value? 1/4. Okay, right. Next one 1/2 as it is, right, 1/2 as it is, and next one 3 minus 1 is 2, 2/3 as it is, and P of C complement equals to right side value is 1/4. 1/2 सेम लिखा and 3 minus 1 को क्या कर रहे हैं अपन? 3 minus 1 बोले तो 2, 2/3 and P of C complement equals to 1/4. Okay, C 2 1s are 2 1s are cancel, remaining P of C complement लिखो. P of C complement लिख के यहाँ पे 3 डिविजिबल में उधर चले गए तो मल्टीप्लाई होता है. 3 into 1 3, 3/4. Clear? Okay, P of C complement we know the formula. P of C complement can be written as 1 minus P of C. P of C complement can be written as 1 minus P of C equals to 3/4. Okay, right. 1 plus 3/4 become minus 3/4 and minus P of C become plus P of C. Clear? P of C value पॉजिटिव रहना ना, P of A, P of B, P of C प्लस रहता है, इसलिए माइनस है इसको, इसलिए उसको माइनस. नहीं तो ये वैसे ही रख के ये 1 उधर लग गए तो फिर भी माइनस आता, लेफ्ट साइड राइट साइड माइनस कैंसिल होता. ओके, राइट. सो 4 into 1 4 minus 3/4 equals to P of C. So therefore P of C equals to what is 4 minus 3? 1. 4 minus 3 1/4. So
So P of A value completed, P of B value completed, and P of C value also completed. Okay. So P of A, P of B, P of C. The second question also completed, right? The next problem is third question. Okay. So first problem completed and second problem also completed. Okay. Right. The next solution is next problem. If the three newspapers capital A, capital B, capital C are three newspapers from a city. A, B, C are three newspapers from a city. 20% of the population read capital A, 16% read capital B, 14% read C, 8% read both A and B, 5% read both A and C, 4% read both B and C, 2% read all the three. Find the percent of the population who read at least one newspaper. Okay, so at least one newspaper read करे सो वाला find out करना है. Okay, right. See, so the three newspapers A, B, C, last वाला दिख रहा बोर्ड पे, right. Okay, so A, B, C are three newspapers. Okay, so A, B, C are three newspapers. Okay, so 20% of the population read A, 20% read capital A, 20% read A. Okay, so that implies P of A equals to 20%. Okay, 20%. 20% means 20 by 100. 20% means P of A equals to 20% means 20 by 100. Okay, so 20% read A newspaper. That implies we can take P of A equals to 20%. So 20% means 20 by 100. Next, 16% read B paper. 16% read B. 16% read B. So that implies we can take P of B equals to 16% means 16 by 100. 16% means 16 by 100. So capital A paper completed and a B paper completed. Next to 14% read C paper. 14% read C. Okay, so that implies we can take P of C equals to 14% means 14 by 100. Okay, 14% means 14 by 100. Okay, so C also completed. Next, 8% both A and B. 8% A and B. 8% A and B. So that implies 8% read A and B. That implies P. A and B means A intersection B. A and B means A intersection B. So 8% means 8 by 100. 8% means 8 by 100. A and B. So 8% A paper भी read करते हैं and B paper भी read करते हैं. Means read A newspaper and read B newspaper. That implies intersection. So P of A intersection B means 8% means 8 by 100. Next 5% both A and C. 5% A and 5% A and C. Okay, 5% A and C. That implies P of A and C means A intersection C is 5%. Means simple 5% means 5 by 100. Okay, right. Next to 4% both B and C. 4% B newspaper भी पढ़ते and C newspaper भी पढ़ते. So B and C. 4% both B and C means P of B intersection C equals to 4% means 4 by 100. Okay, right. So 4% complete. Next 2% all the three. 2% all the three means all the three means 2% all three. All three means P of
A intersection B intersection C. All three means 2% read, all three means 2% read A newspaper, B newspaper and C newspaper. That means intersection. Okay, 2% means 2 by 100. Clear? And find the percent of the population who read at least one newspaper. At least one newspaper. At least one newspaper. At least one newspaper. One newspaper means P of A or B or C equals to question mark. Means at least one newspaper read करे सो वालों का population find out करना. That means P of A union B union C find out करना है. Clear? So confuse नहीं होना. At least one newspaper बोलो तो A P of A intersection B intersection C नहीं होता. P of A union B union C. Union means R. A न्यूज़पेपर रीड करते आर, बी न्यूज़पेपर रीड आर, सी न्यूज़पेपर रीड करते. मीन्स एटलीस्ट वन मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट यूनियन ऑफ ऑल थ्री. मीन्स पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ऑल थ्री मीन्स इंटरसेक्शन. Find any one newspaper, at least one, A union, B union, C. Okay, right. So already we know the formula P of A union, B union, C. So P of A union, we have to find out P of A union, B union, C. Clear? Okay, union formula we know already. P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of C intersection A or A intersection C plus P of A intersection B intersection C. This is the formula. ये ऑलरेडी 10th क्लास का फार्मूला है, बट 10th क्लास में P के जगह पे n रहता. n of A union B union C equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of C intersection A plus n of A intersection B intersection C. क्लियर? अगर यहाँ पे यूनियंस लिए तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लेते, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शंस लिए तो यहाँ पे यूनियन लेते. राइट? बट अपन फाइंड आउट करना कौन सा है? कंपलसरी यूनियन वाला फाइंड आउट करना, इसलिए इसका फार्मूला लिख दिए. इंडिविजुअल का प्लेसेस आता, डबल वाला माइनस आता, ट्रिपल वाला, ट्रिपल बोले तो ए बी सी वाला प्लस लेते. ओके, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. P of A value, P of A value, what is P of A? 20 by 100. P of A value is 20 by 100. Okay, P of A value is 20 by 100 plus P of B wala 16 by 100. Clear? And plus P of C. What is P of C value? 14 by 100. Clear? And minus P of A intersection B. A intersection B value 8 by 100. Clear? Okay, P of A intersection B value क्या है? 8 by 100. Next B intersection C. What is B intersection C? 4 by 100 minus 4 by 100. Next C intersection A or A intersection C. We can write anything. Okay, A intersection C भी लिख सकते हैं, C intersection A भी लिख सकते हैं. So 5 by 100. Okay, right. So यहाँ तक होगा प्लस इंटरसेक्शन वाला, इंटरसेक्शन वैल्यू 2 by 100 प्लस 2 by 100. Okay, so see all the denominators are same. Okay, all the denominators are same. What is the denominator? 100 means LCM is also 100. So denominators LCM same means write the numerators as it is. Okay, so 20 as it is plus 16 as it is plus 14 as it is minus 8 minus 4 minus 5 plus 2. क्लियर? एक बार प्लस वैल्यूज ऐड करेंगे. 20 प्लस 16 36, 36 प्लस 14 50, 50 प्लस 2 52. ओके, 52 पॉजिटिव वैल्यूज कंप्लीट होगा. नेक्स्ट नेगेटिव वैल्यूज माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 5 माइनस 17 by 100. Okay, so 52 minus 17, 52 minus 17 is
12 minus 7 means 52 minus 17 is 35. 12 minus 7 5, 6 रहता, 6 minus 1 3, sorry 4 रहता, right? 4 minus 1 3, रिमाइंडर चला जाता ना, यहाँ पे 4 रहता, 4 minus 1 3, so 35 by 100. By 100 means 35%. Okay, by 100 means 35%. So 35 by 100 is the answer. 35 by 100 means we have to find out percentage, means 100 निकाल दिए तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन, 35%. means the percent of the population, means 35% read at least one newspaper, read at least one newspaper, at least one newspaper, at least one newspaper. Clear? So this is the solution of third one. कुछ भी नहीं है, खाली जो क्वेश्चन में दिए वो लिख दिए, फार्मूला लिखे सब्स्टिट्यूट करें. Clear? Okay, right. The next problem is, okay, the next problem is the probabilities of three events capital A comma capital B comma capital C are such that P of A equals to 0.3, P of B equal to 0.4, P of C equals to 0.8, P of A intersection B equal to 0.08, P of A intersection C equal to 0.28, P of A intersection B intersection C equal to 0.09, and P of A union B union C greater than or equals to 0.75. Show that P of B intersection C lies in the interval 0.23 comma 0.48. इसका मतलब क्या है, P of B intersection C का लिमिट्स 0.23 and 0.48. So ये P of B intersection C ये दोनों के बीच में रहता बोल के अपन प्रूव करना है. ओके, राइट. सो फर्स्ट जो वैल्यूज दिए वो वैल्यूज अपन लिखेंगे. ओके, राइट. A comma B comma C are three events, are three events. Okay, so दिए, so three events लिख दिए, and given P of A equals to given 0.3. okay, and P of B is given 0.4 and P of C given 0.8. okay, right. Individual values are completed. Next, intersection. P of A intersection B is given 0.08. okay, and P of A intersection C is given, P of A intersection C is given 0.28 and P of B intersection C is not given. We have to find out. okay, P of B intersection C is in between बोल के आंसर अपन प्रूव करना. P of B intersection C नहीं है, so वो as it is अपन लेना. okay, right. Next, intersection value also given. Individuals intersection, A intersection B intersection C equals to 0.09. okay, right. Next, and also given, and P of A union B union C is greater than or equals to 0.75. okay, P of A union B union C का वैल्यू क्या दिए, 0.75 से बढ़कर रहता बोल के दिए, राइट. P of A union B union C is greater than or equal 0.75. 0.75 से ग्रेटर देन रहता और इक्वल रहता. ओके, ये जो कंडीशन दिए ना, ये कंडीशन अपन फर्स्ट ले लेंगे. ओके, सो P of A union, so P of A union B union C is given greater than or equals to 0.75. इसका मतलब क्या है, 0.75 से ये वैल्यू ज्यादा रहता या इक्वल रहता. ज्यादा भी ले सकते या इक्वल भी ले सकते. दैट इज अपन क्या ले रहे बोले तो 0.75 लेस देन और इक्वल P of A union B union C लेस देन और इक्वल टू 1 ले रू मैं. मीनिंग देखा, मीनिंग देखो एक बार, ये वैल्यू 0.75 से बढ़कर रहता या इक्वल रहता, ग्रेटर देन और
इक्वल रहता. सो आई एम टेकिंग 0.75 इज लेस देन 1. ओके, सो 0.75 से बढ़कर बोले तो 0.8, मैं क्या लिया 1 लिया, राइट. सो मीन्स दिस वैल्यू इज इन बिटवीन 0.75 to 1. Okay, right. Now write the formula of 0.75 as it is. लिखो 0.75 as it is less than or equal to formula of this one. लास्ट प्रॉब्लम में बोले ना यूनियन है, तो इसका फार्मूला क्या है, P of A प्लस P of B प्लस P of C माइनस P of A इंटरसेक्शन B माइनस P of B इंटरसेक्शन C माइनस P of C इंटरसेक्शन A, ओके, एंड प्लस P ऑफ, यहाँ पे यूनियन दे दिए ना अपन, इंटरसेक्शन लेना, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. क्लियर. P of A प्लस P of B प्लस P of C माइनस P of A इंटरसेक्शन B माइनस P of B इंटरसेक्शन C माइनस P of C इंटरसेक्शन A प्लस P of A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 1. बीच में ये जो 0.75 है वो एज इट इज लिखा और 1 भी एज इट इज लिखा, बीच में जो है उसका फार्मूला लिखे. नाउ इसमें जो जो वैल्यूज दिए वो वैल्यूज अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट द गिवन वैल्यूज. ओके, 0.75 as it is less than or equals to, what is P of A value given? P of A value is given 0.3. okay, plus P of B, what is P of B value? 0.4. okay, then plus P of C, what is P of C value? 0.8 given. okay, then minus P of A intersection B. A intersection B value is given 0.08. 0.08. This one complete. Next minus. Okay, P of B intersection C. B intersection C not given, so write as it is. Okay, P of B intersection C and minus P of C intersection A or A intersection C 0.28. Okay, right. Next plus P of A intersection B intersection C is 0.09 and less than or equals to 1 as it is. Okay, the given values are substitution completed. Okay, right. Now add the plus values. First of all positive values, then negative values. So 0.75 write as it is. 0.3 plus 0.4 0.7. 0.7 plus 0.8 0.7 0.8 1.5 1.5 और यहाँ पे और एक प्लस वैल्यू है 0.09 1.5 प्लस 0.09, राइट. यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा तो 0.3 एंड 0.4 एंड 0.8, इसका कितने आया आंसर अपने को 1.5 आया. और यहाँ पे और एक प्लस वैल्यू है ना 0.09. ओके, 0.09. देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर कुछ भी नहीं है वो तो अपन क्या लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं. पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं है ना, उसको जीरो भी लिख सकते हैं, राइट. इसका टोटल क्या करना, प्लस वैल्यू करना. टोटल क्या है 9 है. क्लियर. ओके, नेक्स्ट 8 प्लस 4 12 12 प्लस 3 15. ओके, 0.1 कैरी मीन्स 1.59 आया. प्लस वैल्यूज आर 1.59. ओके, प्लस वैल्यूज आर 1.59. ओके, नाउ माइनस वैल्यूज ऐड करेंगे, ये वैसे ही रखो. माइनस वैल्यूज 0.08. क्लियर, दिस वन कंप्लीटेड. एंड नाउ 0.28. ओके, सो प्लस वैल्यूज means 16 1 carry 1 plus 2 3.0, बट दोनों को माइनस है ना, इसलिए अपन क्या करते हैं माइनस लिखते हैं. ओके, माइनस 0.36, राइट. टोटल नंबर्स कंप्लीटेड. नाउ राइट P of B intersection C minus P of B intersection C less than or equals to 1 as it is. ओके, राइट. अब यहाँ पे देखो ये प्लस वैल्यू है, माइनस वैल्यू माइनस करो. 9 minus 6 3, राइट. यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 0.75 एज इट इज.
okay, 0.75 as it is, less than or equal to 9 minus 6 3, okay, and 5 minus 3 2, okay, 0, okay, and 1 minus 0 1, 1.23, okay, 9 minus 6 3, 5 minus 3 2, 1 minus 0 1, 1.23 minus P of B intersection C less than or equals to 1, right? Listen carefully, यहाँ पे प्लस वैल्यू, ये माइनस वैल्यू, दो को माइनस करें तो 9 माइनस 6 3 एंड 5 माइनस 3 2, 1 माइनस 0 1, राइट? नाउ इससे पहले प्रॉब्लम करे थे ना अपन पी प्रॉब्लम्स करे थे, देखो बीच में ओनली पी रहना बोल के बोले थे, रिमेनिंग सेंड करना। यहाँ पे अपन को क्या पूछे, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी पूछे, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड सेंड करना एंड राइट साइड सेंड करना, राइट? सो ये प्लस 1.23 बिकम माइनस 1.23, ओके, सो दैट इम्प्लाइज प्लस बिकम माइनस, सो माइनस, सो 0.75 ऐसे ही लिखो, right, and minus plus 1.23 become minus 1.23, 1.23, okay, less than or equals to as it is 1.23 चले गया, माइनस वैसे ही रहता, माइनस P of B intersection C as it is, okay, then less than or equals to 1, लेफ्ट साइड सेंड करें ना, राइट साइड भी सेंड करना पड़ता, माइनस प्लस 1.23 बिकम माइनस 1.23, क्लियर, ओके, राइट? यहाँ पे देखो एक बार 1.23 में से 0.75 निकाल लेना, 1.23 माइनस 0.75 माइनस करना, ओके, 1.23 बड़ा नंबर है ना, इसलिए 1.23 में से 0.75 माइनस कर रहे हो, स्लाइड दिख रहा, राइट, ओके, ओके, राइट, so 3 minus 5 not possible, so 1 borrow, 13 minus 5 means 8, okay, and 1 is there, 11 minus 7 4, okay, 0 is there, but okay, 0.75 minus 1.23 means 0.48, but बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 1.23 बड़ा है, उसको माइनस है, तो आंसर भी क्या आता, माइनस आता, लेस देन आर इक्वल्स टू माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एज इट इज, लेस देन आर इक्वल, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 1.23 वैल्यू बड़ा है, ओके, माइनस 1 वैल्यू माइनस करना मीन्स 1.00 मीन्स 3 minus 0, 2 minus 0, 1.1 means 0, okay, so आंसर क्या आता, 0.23 आता, बट बड़ा नंबर 1.23 है ना, so minus 0.23, clear, okay, right, so let minus is the common, minus is the common means माइनस वाला प्लस होता, प्लस वाला माइनस होता, ये साइन भी चेंज होता, मीन्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, माइनस चले गए तो पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी लेस देन आर इक्वल्स टू बिकम ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, माइनस टर्म बिकम प्लस टर्म, इसको रिवर्स लिखो, 0.23 ग्रेटर देन आर इक्वल टू को क्या लिखना, लेस देन आर इक्वल टू, रिवर्स लिख रहे हैं ना, मीनिंग चेंज नहीं होता, रिवर्स लिखो, एंड पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 0.48, okay, so P of B intersection C is in between C 0.23 and 0.48, therefore P of B intersection C lies between lies in the interval 0, 0.23, 0.48, क्लियर? सो आंसर क्या आया अपने को, 0.23 आया एंड 0.48 आया, क्लियर, ओके, दीज आर द प्रोबेबिलिटी गन शॉट क्वेश्चंस ऑफ 7 मार्क्स, ओके, 7 मार्क्स का गन शॉट क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस कंप्लीट होगा, ओके, राइट। सो अगर आप लोगों को ये जो मैं बोलने का तरीका या सॉल्यूशंस आपको क्लियरली समझ में आ रहा तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर चैनल में नया आया तो सब्सक्राइब कीजिए, ओके, थैंक यू।